और किसी ने ट्राई किया? किया लेकिन नहीं हुआ सर 6 डिग्री तक। हाँ, कैल्सी पर डायरेक्ट इक्वेशन सॉल्व हो गया। हो गया। ओके, कितना है आंसर? 0.1448। और किसका हो गया कैल्सी पर? और किसी का हुआ कैल्सी पर? ठीक है, नहीं हुआ तो लेट्स सी, we'll solve it today. I have done it actually. I'll show you what I have done. Okay, so we were somewhere, ये सब किया था हमने, राइट? यहाँ तक हम पहुँच गए थे, राइट? इक्वेशन 5. Any questions on equation 5? ठीक है, so what we are doing now, we have to solve this equation 5 for two pressures, 20 bar and 200 bar, right? And find epsilon values. Okay, so what you do is substitute. ये इक्वेशन लिया यहाँ पर, इसको सिर्फ कॉन्स्टेंट्स एक साइड में लेके आया मैं. I brought all the constants on this side, right? And what I get is 1.35 10 to minus 3 p square. Equation 6 from equation 5. Bringing all constants on pressure side. ठीक है. So now 4th degree है, but it is a very simple problem, because if you see, this is p square, this is square, this is square, this is to power of 4, right? तो क्या कर सकते हैं हम? Get any idea? स्क्वायर रूट ले सकते हैं. स्क्वायर रूट लेने का इधर का दोनों का, राइट? ये इजी है. You can take the square root of all these terms, left hand side, right hand side, and what you get is equation 7, right? यहाँ पर एप्सिलॉन स्क्वायर का एप्सिलॉन हो जाएगा, 4 माइनस 2 एप्सिलॉन होल स्क्वायर का 4 माइनस 2 एप्सिलॉन हो जाएगा, पीछे 1 माइनस एप्सिलॉन टू द्वारा 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये इसका स्क्वायर रूट है ये, एंड दिस इज पी. सो एक्चुअली इट्स अ सिंपल प्रॉब्लम. कल मेरे को भी स्ट्राइक नहीं हुआ, बाद में मैं करने बैठा, दिखा कि पहले किया है, अभी क्यों नहीं आ रहा है. I solved this problem in the class, right? So you can take the square root, and now what it's very simple thing. Substitute for p 20 bar and for 200 bar and find out epsilon. ठीक है, करो अभी. Equation 7 अगर समझ में आ गया तो you can easily solve it now. अभी कोई difficulty नहीं है. Second order equation है. Any calculator you should be able to solve. और manually भी किया, मैंने manually किया. I didn't even use calculator. I'll show you manually, but first you try to solve this equation 7 with p equal to 20 bar and see if you are able to get the answer. ठीक है, किसी क्वेश्चन है इसके ऊपर? हम 6 आ गया. ठीक है, नहीं है क्वेश्चन तो सब्स्टिट्यूट फॉर p इक्वल टू 20 and find out the value of epsilon for 20 bar. Okay, do it now. This should be simple. Devendra? Yes, sir. Okay, let's solve this equation 7 for p equal to 20 bar and बाद में p equal to 200 bar के लिए करने का है. First solve it for 20 bar, then we'll do for 200 bar. And once you finish calculation for 20 bar, raise your hand.
यस देवेंद्र, क्वेश्चन है कुछ? नहीं सर, सॉल्व हो गया। हो गया? क्या आंसर? सर 0.145 आ रहा है। ओके, ठीक है। इसका हो गया? रेज योर हैंड्स, आई वांट टू सी मोर हैंड्स। जिसका 20 बार के लिए होगा विल सॉल्व इट फॉर 200 बार। जिसका हो गया 20 बार के लिए, 200 बार के लिए सेम इक्वेशन सॉल्व करने का। जस्ट प्रेशर विल चेंज, सो एप्सिलॉन वैल्यू विल चेंज। Once you finish for 200 bar, raise your hand. हो गया 200 बार के लिए? Raise your hand once you finish 200 bar calculations. Yes, Siddhi, कितना आया आंसर?
0.78606. 7 8 गड़बड़ है कुछ. 0.5375 आना चाहिए. सर चेक करती हूँ. ओके, चेक करो. सर 0.53746 है. गुड गुड, दैट्स द राइट आंसर. और किसका हो गया? एनीबॉडी एल्स? देवेंद्र आ गया आंसर? हाँ सर. ओके. दीक्षिता? No, sir. ओके. और किसी का हो गया? हैंड रेस करो जिसका हो गया. वैभव? सर गलत आ रहा है. गलत आ रहा है, क्यों? विराज? सर मुझे तो 0.6 आ रहा है. ठीक है, लेट मी शो यू नाउ. So if you look at this equation, I substitute p equal to 20 बार, तो मेरा ये राइट हैंड साइड में इतना आया. I'm substituting and multiplying all these right hand side terms, and then I just opened it. 4 epsilon minus 2 epsilon square is equal to 0.73485 into, इसको इधर लेके आया तो 1 minus 2 epsilon plus epsilon square. So it is right hand side को open किया and bring all the terms on one side. So I get 2.73485 epsilon square minus 5.4697 epsilon plus 0.73485 equal to 0. Right, and if we solve, I did it in calculator, second order equation.
एप्सिलॉन का वैल्यू 2 आता है. You got two values of epsilon, 1.85 and 0.1448. Right? So we cannot select this one because epsilon is always less than 1. So we'll select 0.1448. ठीक है? Any questions on this? ठीक है, if there are no questions, then we can use this epsilon value to find out the value of conversion z, which is equal to some absolute value of nu I into epsilon upon ni0. And this is for nitrogen, so we are talking about nitrogen here, right? So nu of nitrogen is how much? Nu of nitrogen क्या है? -1. -1, right? So absolute value of that is 1 into epsilon 0.1448, and ni0, that is initial moles of nitrogen, is 1. Right? So conversion is 0.1448 or 14.48%. ठीक है? Any questions on this? Then the same thing for pressure equal to 200 bar. Right side में 0.7 का 0.7.3 हो जाएगा. Same thing किया सब. So we got an equation 9.3484 epsilon square minus 18.6968 epsilon plus 7.3484 equal to 0. Again calculator से solve किया. We got two values of epsilon. Again we cannot select this value because epsilon has to be less than 1. So we select 0.5375. और again same thing यहाँ substitute किया 1 तो we got 53.75% conversion. Yeah, वो. So now it is हाँ second सर, आ order. गए, हाँ आ गया सर. आ गया. तो इट्स सेकंड ऑर्डर इक्वेशन, इतना डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए. ठीक है, समझ में आया? किसी को डाउट है, क्वेश्चन है, यू कैन आस्क नाउ. ठीक है, अगर हो गया तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. Industrial grade methanol can be produced according to this reaction. CO plus 2H2 gives CH3OH. For this reaction, delta G at 400 Kelvin is minus 1.3484 kilojoules. If an equimolar mixture of CO and hydrogen is fed to a reactor maintained at 400 Kelvin and 10 bar, determine the fraction of CO that is converted into methanol at equilibrium. Assume the reaction mixture behaves like an ideal gas. Right? So delta G0 दिया है at 400 Kelvin. What can you find from here? डेल्टा G0 से क्या मिल सकता है हमारे को? के मिल सकता है के एट 400. K मिल सकता है, right? So we can use delta G0 is equal to minus RT ln K and get the value of K. Right? K का वैल्यू मिल गया तो we can find out ky. Right? ky मिला तो you can find out value of epsilon. जैसे अभी किया वैसे ही है. Only thing is in this case you are given delta G0 from where you have to find out K value. बाकी प्रॉब्लम इज एग्जैक्टली सिमिलर, कोई डिफरेंस नहीं है. करो अभी. लेट्स सी इफ यू कैन डू इट विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम मी. समझ में आया प्रॉब्लम? किसी को क्वेश्चन है इसके ऊपर कैसे करने का? सर एक बार रिपीट कीजिएगा. Delta G0 is given at 400 Kelvin, right? So we can find out the value of K at 400 Kelvin. बराबर? यस सर. Once you get the value of K, previous problem हमको K का वैल्यू दिया हुआ था.
बराबर। जो अभी का अभी सॉल्व किया प्रॉब्लम, उसमें के का वैल्यू दिया था, यहाँ पर के का वैल्यू नहीं दिया, सो वी हैव टू फाइंड आउट के फ्रॉम डेल्टा G0. And rest of the problem is similar because now you know the relation between k and ky and p, जो अभी हमने यूज किया, राइट, इक्वेशन बिटवीन k and ky and p, वो सब पता है हमारे को, राइट। k का वैल्यू मिल गया तो वी कैन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ ky. Once you know the value of ky, we can find out value of epsilon. हाँ यस सर समझा। Exactly similar problem. Only thing is इसमें हमारे को k का वैल्यू इनडायरेक्टली, आई मीन डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, वी हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम डेल्टा G0. बाकी सब सिमिलर है, एग्जैक्टली कुछ फर्क नहीं है। k first, then write all the mole fractions in terms of epsilon, substitute in the value of ky, and you get an equation for epsilon. Then you can solve that equation for epsilon. So what is the value of k? Find out first. So 1.5. Okay, so k is 1.5. Good. So once you know the value of k, now we need to write equation for ky. ky is equal to क्या हो जाएगा? k equal to ky into क्या था? e raised to power of nu. Right? And what is ky equal to for this reaction? Y of methanol raised to 1. Y of methanol or Y divided by Y of hydrogen raised to 2. y of hydrogen raised to power of 2 and y of CO, right? ठीक है. Now what is the basis you're going to take? Basis क्या रहेगा? Because you need basis to solve anything, right? 1 mole of CO. 1 mole of CO. CO or is that enough? 2 moles of hydrogen. ये क्या दिया है? 1 mole H2. 1 mole H2. Read the problem carefully. Sorry. Equimolar mixture of CO and hydrogen is given. Stoichiometric नहीं दिया है. प्रॉब्लम स्टेटमेंट करेक्टली पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा. अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट में मिस कर दिया कुछ तो देन यू विल हैव अ रॉन्ग आंसर. So equimolar mixture of CO and hydrogen, that means 1 mole of CO plus 1 mole of hydrogen is there in the feed. ठीक है. So now what is why CH3OH? In terms of epsilon, सर K1 आ रहा है. ये 1 नहीं आया, 1.5 आएगा. 1.5 is correct value. R क्या यूज किया आपने? What is the value of R? सर वो डेल्टा जी को जूल में किया और बाद में 8.314 ली. Delta G0 is equal to minus 13484 joules में लेना पड़ेगा.
जूल्स पर मोल होगा, जूल्स इसने ये दिया है, आई थिंक इट शुड बी पर मोल, एंड R इज इक्वल टू 8.314 joules per mole Kelvin. If you substitute these values, you should get K equal to 1.5. सर वो डेल्टा जी नॉट 1348.4 होगा ना? Oh yeah, 0.4 होगा बराबर. You're right. So if you substitute these values of delta G naught and R, you should get K equal to 1.5. And temperature is equal to 400 Kelvin. ठीक है, so YCH3OH क्या हो जाएगा in terms of epsilon? फिर एप्सिलॉन अपॉन 2 माइनस 2 एप्सिलॉन. Epsilon upon 2 minus epsilon. ये कैसे आया? फिर 2 माइनस 2 एप्सिलॉन. 2 minus 2 epsilon कैसे आया लेकिन ये? फॉर्मूला क्या है अपना y का? फिर ni0 प्लस म्यू आई एप्सिलॉन अपॉन n0 प्लस म्यू एप्सिलॉन. ठीक है, so ni0 is for CH3OH is 0, right? Plus nu I is for CH3OH 1 into epsilon upon n0 क्या है? 1 plus 1 2 plus nu is what? For this reaction it is 1 minus 2 minus 1. Right? So this is minus 2 into epsilon. आंसर करेक्ट है, बट लोगों को समझेगा नहीं इसलिए दिखाना पड़ता है ये. I don't know how many people understood that answer first. So always remember the formula and you can find the answer. ठीक है, similarly we can write y Hello. of, yes, सर यहाँ पे हमने म्यू निकालते समय मोल्स CO के 1 और H2 के 2 क्यों लिए? हमारा तो इक्विमोलर है ना. nu is always from stoichiometry. This is always Okay. from मतलब stoichiometry. स्टैंडर्ड स्टोइकोमेट्री उससे ही निकालना है, कितना भी दिया हो. Reaction से है ये. This is reaction. Stoichiometry is always from reaction. वो reaction में Okay sir, कितना got होता है, right? ये n के लिए यूज किया +1, n हॉर को यूज करने का है ये 1 + 1, not for nu. Nu is stoichiometric coefficient that does not change with feed conditions. Which with the feed stoichiometric condition is going to remain the same. 1 mole of CO will always react with 2 moles of hydrogen to give 1 mole of CH3OH. Feed में कुछ भी हो, doesn't matter. 1 and 1 is only for Ni0 and N0, not for nu. ठीक है. Similarly, y of CO क्या हो जाएगा? y of CO माइनस एप्सिलॉन अपॉन 2 माइनस 2 एप्सिलॉन. minus epsilon upon, 2 माइनस 2 एप्सिलॉन. करेक्ट है क्या ये? Is this correct? So 1 minus epsilon 1 initial. minus 1 epsilon. माइनस एप्सिलॉन. Ni0 is 1 for CO, right? Initial moles of CO is 1. बराबर है. So this is 1 minus epsilon upon 2 कॉमन निकाला, 1 minus epsilon. तो क्या हो जाएगा ये?
इक्वल टू 0.5, ठीक है, बिकॉज 1 माइनस एप्सिलॉन कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में. नाउ y ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा? What will y of hydrogen? 1 1 minus 2 2 epsilon upon 2 minus 2 epsilon. 1 minus 2 epsilon upon 2 minus 2 epsilon. The denominator will remain the same. It's not going to change at all. So that's what y of hydrogen is, right? So now we can put this in for ky, and what we'll get is YCH3OH is epsilon upon 2 minus 2 epsilon divided by 0.5 ठीक है. ये is this correct? Yes, sir. So then this and this will cancel out, and what we'll get is So 2 epsilon upon 1 minus 2 epsilon. okay. So this is 2 epsilon upon 1 minus 2 epsilon, is it? Yes. sir. Okay, so once you put this value ky, लेकिन बुक में कुछ अलग दिया है, दैट्स व्हाई आई वाज वंडरिंग क्या है. ठीक है, लेट्स सॉल्व दिस. कहीं तो मिस्टेक किया है या हमने यार बुक में मिस्टेक है. ठीक है, सो ky इज इक्वल टू क्या था? ky इज इक्वल टू k into p raised to power of minus mu, right? And pressure is how much? 10 bar. And nu is how much? -2, यानी 2 हो जाएगा. ठीक है, बिकॉज nu इज इक्वल टू -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट? So what we'll get is 2 epsilon upon 1 minus 2 epsilon is equal to 100 into
150. ठीक है, let's see how much we get value of epsilon. Sir, Yeah, sir, ky की value 4 epsilon into 1 minus epsilon upon 1 minus 2 epsilon का whole square आएगा ना? एक मिनट है. यस, सिद्धि बोल रही थी ना, कौन बोल रहा था? Yes, sir. या गड़बड़ Sir, किया हमने. वो जो है नो, स्क्वायर है. है, ये वाई हाइड्रोजन स्क्वायर है, तो ये मैं बोला कुछ तो गड़बड़ किया हमने. आई गॉट यू राइट, यू आर राइट. ये स्क्वायर आएगा यहाँ पर. ठीक है, सो दिस थिंग, ये जो है ये कैंसिल हो जाएगा, बट इट विल गो ओनली विद दिस. नहीं, बुरा नहीं होगा, सॉरी. तो दिस विल बी टू एप्सिलॉन एंड इनटू 2 माइनस 2 एप्सिलॉन, एक कैंसिल हो जाएगा, और 1 माइनस एप्सिलॉन होल स्क्वायर, राइट. So if you take out 2 here, 4 epsilon, 1 minus epsilon upon 1 minus epsilon whole square. Oh, 1 minus 2 epsilon नीचे, sorry, नीचे में 2 epsilon है. ठीक है, is it correct now, Siddhi? yes, sir. Yeah, so what we'll get is 4 epsilon 1 to 1 minus epsilon upon 1 minus 2 epsilon whole square is equal to k into ठीक है. So what you get is 4 epsilon into 1 minus epsilon is equal to 150 into 1 minus 2 epsilon whole square. ठीक है.
This is okay. So now you can solve this equation for epsilon and find out the value of epsilon. हेलो Yeah. सर, यहाँ पे पी रेस 2 माइनस 2 आएगा ना? हाँ, क्या बोल रहे? क्या बोला? Can you repeat? हेलो, या आवाज आ रही है सर? हाँ बोलो हाँ ना। सर, पी रेस 2 यहाँ पे -2 आएगा ना? -2 क्यों आएगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्योंकि न्यू? हमारा न्यू -2 है ना हमारा। हाँ तो फिर से माइनस न्यू है ना। हाँ, ओके ओके ओके, गॉट इट। सर एप्सिलॉन के दो वैल्यूज आ रहे हैं, हाँ क्या आ रहे वैल्यूज? 0.54069 और 0.45931 0.54 069 और 0.45931। okay, so which value should we use? Anybody has an idea क्या वैल्यू यूज करना चाहिए इसके लिए? There are two options, right? Both are below 1. लास्ट टाइम बोला था ना कि एप्सिलॉन शुड बी लेस देन 1. अभी दोनों वैल्यू बिलो 1 आ रहा है तो क्या सिलेक्ट करना चाहिए? विच इज द करेक्ट वन? सर छोटा वाला, क्यों? बिकॉज सर इक्विमोलर मिक्सचर था ना। हाँ सर इक्विमोलर मिक्सचर दिया था ना, हाँ तो हाफ। हाफ यानी क्या? रीजन क्या? यू आर राइट, आंसर इज राइट, but I want to understand the logic behind it. Whether you understood the logic. Why it should be 0.45, not 0.54? सर तो CO का मोल 0.5 होगा ना उस हिसाब से, अगर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन होगा तो You're absolutely right. आधा ही रिएक्शन एक्सटेंट होगा। Absolutely right. You have 1 mole of CO and 1 mole of hydrogen, right? Whereas what you need is, for 1 mole of CO, you need 2 moles of hydrogen. Right? So maximum CO which can react is half. क्योंकि हाइड्रोजन आधा ही दिया है, राइट? 2 मोल नहीं दिया, 1 मोल ही दिया है, तो CO मैक्सिमम रिएक्ट होगा ओनली हाफ ऑफ दिस थिंग, दैट इज 1.5. उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता CO रिएक्शन, and that is why we should take epsilon value as this one and not this one. समझ में आया सिद्धि? सिद्धि समझ यस में आया क्या? बिकॉज CO एंड हाइड्रोजन इक्विमोलर रेशो दिया है, 1 मोल ऑफ CO एंड 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इन फीड. एक्चुअल कंडीशंस में ही है, राइट? बट वी नीड 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर 1 मोल ऑफ CO. तो मैक्सिमम CO रिएक्शन हो सकता है आधा मोल ओनली, बिकॉज 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ हाफ अ मोल ऑफ CO. इक्विवेलेंट स्टेटमेंट, राइट?
बट सिंस ओनली 1 मोल दिया है यहाँ पर, so maximum it can react is 0.5 mole CO. So we cannot select this, that's why we have to go for this value of epsilon. Right, so once we get the value of epsilon, we can find out the value of Z, which is equal to absolute value of nu I into epsilon upon Ni 0. If you're taking CO here, limiting reactant, CO के लिए nu I कितना है? -1. -1, sorry. Absolute value of -1 into epsilon is 0.4593 upon Ni 0 is 1. So it is or 45.93%. ठीक है, समझ में आया लोगों को? ठीक है, समझ में आया तो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, which is this example. Ammonia synthesis reaction is represented by this reaction. N2 plus 3 hydrogen gives 2 moles of ammonia. The reactant stream consists of 1 mole nitrogen, 3 moles hydrogen and 2 moles argon. What is argon? नोबल गैस। ग्लोबल गैस। बट Yes. हमने जो अभी तक स्टडी किया है, ये थ्योरी पढ़ा है, राइट? थ्योरी में हमने कुछ कुछ स्टडी किया, इफेक्ट ऑफ दिस, इफेक्ट ऑफ दिस, इफेक्ट ऑफ दिस, वो कहाँ आएगा, फिट होगा ये? देखा था ना, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, हाँ? Presence of inert. Yes, this is inert. So now we are going to study the effect of inerts on conversion. The temperature and pressure of the reaction are 675 Kelvin and 20 bar. The equilibrium constant of the reaction is given as 2 × 10⁻⁻⁴. Determine how the conversion of nitrogen is affected by the presence of argon. Right? So अभी हमने जो आज प्रॉब्लम सॉल्व किया था, if you remember, ये वाला प्रॉब्लम किया था, right? This is also nitrogen, and we have calculated for 675 and 1 bar, 20 bar, sorry, right? K का वैल्यू सेम है, टेम्परेचर प्रेशर सेम है, और इसमें यहाँ पर क्या दिया था? स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट्स ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन दिया था, राइट? और इसमें कुछ इनर्ट्स नहीं मिक्स किया था, बराबर? सो नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर टेकिंग द सेम प्रॉब्लम, सेम रिएक्शन कंडीशन, सेम के, ओनली एडिंग इनर्ट टू द फीड, and then we'll see what is the effect of inerts on conversion. समझ में आया प्रॉब्लम? प्रॉब्लम समझ में आया क्या? Similar thing, exactly same करने का, only thing is now feed will be different. Now what will be? Feed is this. Previously feed was this. तो पहले आज सवेरे प्रॉब्लम किया, उसमें फीड ये था, अभी हमारा फीड ये हो गया. दैट इज ओनली चेंज, बाकी सब सेम है, एग्जैक्टली सेम है. ओनली N0 विल चेंज. N0 क्या हो जाएगा? व्हाट बी N0? 6. यस, 1 + 3 + 2. पहले हमारा 4 था, अभी उसको हमने 6 कर दिया. सो द इक्वेशन फॉर वाई अमोनिया विल चेंज, वाई हाइड्रोजन विल चेंज, वाई नाइट्रोजन विल चेंज. डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा, राइट? न्यूमरेटर में कुछ चेंज नहीं होगा, ओनली डिनोमिनेटर विल चेंज बिकॉज N0 इन द डिनोमिनेटर. Ky हमको पता है, बिकॉज वी नो K
right? We know pressure, so we can find out ky, right? So substitute karo, exactly similar problem hai, only thing is n0 will change, so you'll get a different value of conversion. समझ में आ रहा है प्रॉब्लम? Yes. ठीक है, कर सकते हैं. If you understand the concept, it is very simple. If you don't understand the concept, अब तक जो प्रॉब्लम की है समझ में आया तो ये बहुत ही ईजी है. अगर नहीं समझ में आया तो बहुत ही डिफिकल्ट है. So I will give this you as a homework assignment. You'll solve in the class also, but try to solve at home without looking at the book. With this understanding कि सिर्फ feed change हुआ है, K is same, temperature is same, pressure is same, only the feed has changed. फॉर्मूला सब सेम रहेंगे, यानी इक्वेशन सेम रहेंगे, सिर्फ थोड़ी वैल्यूज चेंज होगी बिकॉज फीड हैज चेंज. सो देयर विल बी सम चेंजेस इन योर y वैल्यूज. सब्स्टिट्यूट करके न्यू एप्सिलॉन वैल्यू निकलेगा एंड देन वी गेट न्यू कन्वर्शन. ठीक है, कर सकते हैं. कितने लोग Yes, ट्राई sir. करेंगे? हाउ मेनी विल ट्राई एट होम? आई वांट टू सी हैंड्स. क्या है थ्योरम में, ये जब तक खुद नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा. यू हैव टू डू इट योरसेल्फ. आई कैन शो यू ऑल द कैलकुलेशंस, बट दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प. You have to actually solve it yourself to understand these things. Okay. ठीक है. So we'll meet tomorrow.